Only 52% of adult Pakistani women own a mobile phone, and Pakistan has one of the widest mobile gender gaps in the region. Women are 49% less likely than men to use mobile internet, and according to some studies, nearly 6 in 10 women face some sort of restrictions in using the internet. Clearly, there is a large gender digital divide, and it has been receiving increasing attention in the past few years. But why is this so? Why is it necessary to bridge the digital divide, and what can we achieve on the back of greater digital inclusion of women? The attention to gender gap in digital inclusion owes to the pervasiveness of digital technologies across a multitude of sectors: education, health, labor, and financial markets, to name just a few, a trend that has only accelerated post-COVID. Gaps in digital access, then, create new inequalities, while also amplifying existing ones. Lacking access to the digital space means reduced opportunities to network and connect, to learn new skills and hone existing ones, to branch out and realize new avenues of increased earnings, to obtain credit, save, and attract customers, domestic and abroad. In fact, the UN in 2016 recognized the internet and access to it as a catalyst for the enjoyment of human rights, including but not limited to the right to freedom of expression, which is a fundamental right on its own, but also an enabler of other rights like economic, social, and educational rights. Indeed, when leveraged correctly, technology has great potential for economic and social empowerment. When it comes to the labor market, we know that women fare significantly worse than men in terms of economic participation and opportunity, a fact underscored almost yearly through the WEF Global Gender Gap Report, which consistently ranks Pakistan amongst the lowest on this subindex. There are several factors at the institutional, societal, and individual household levels that lead to Pakistan's underperformance vis-a-vis women's formal labor force participation levels. A main contributor is the high reproductive burden, combined with mobility restrictions. So is the lack of safe transport and a hostile public space and workspace that links back to women's defined roles as caretakers, belonging in the household and not at work. In our cumulative 2 decades of gendered research in Pakistan, women from all manner of backgrounds have repeatedly highlighted both the close monitoring they face in terms of their mobility beyond the home and the very long hours they spend on housework as well as child and elderly care. They have also emphasized the hostility and harassment they face both en route to and at work. All of these factors severely limit their ability and even desire to work outside the home. Could digital technology help alleviate these constraints? Improved digital connectivity will not only allow women to work remotely but to also gain access to international freelance jobs. Improved digital connectivity would not only allow women to work remotely but to also gain access to international freelance jobs. We saw this unfold at a mass scale during COVID, and we continue to see women upskilling themselves on platforms like Coursera and seeking work from home with international companies. There are dedicated Facebook groups like Women of Diversity whose mission is to empower women through online workshops and connect them to remote employers. We find the same amongst low-income, low-literate women too, using technologies to set up and expand their home business, as well as an emphasis on their digital upskilling through community organizations and rights advocacy groups. We find that women who have access to devices and the internet in Pakistan leverage the platforms available to them to carve out financial independence, seek social justice, explore their identities, form collectives to empower each other, and to have fun, a rare conversation in our context. Technologies like Facebook, WhatsApp, Twitter, and TikTok allow them to negotiate within and around social restrictions without openly challenging them and to carve out more autonomy and agency for themselves, as they have always done. We find in our work that when women have the motivation and recognize the value of digital spaces and platforms, they are able to adopt, learn, and maximize the benefit of these platforms, regardless of literacy or income levels. The most significant barriers are often those of technology designs. For example, most women in Pakistan have access to mobile devices as shared resources. However, most applications like WhatsApp or mobile wallets assume a one-user, one-device model, raising serious privacy and adoption barriers for women.
Yet digital technologies are not a panacea, but a complex, nuanced landscape which requires action on multiple fronts to include women. We have interviewed some 200 low-literate, low-income women in a variety of occupations, factory, domestic, and home-based work. We have found a great deal of reluctance, even an active shunning, of using mobile phones amongst these working women when they step out of the home. They relayed that using the phone outside the home would cause problems for them with their families. In contrast, women who worked from home were much more active in their use of phones and the internet. In essence then, our work shows that women face a trade-off between physical and digital mobility, giving up one space in order to access the other. This not only limits the type of upskilling that women in different types of work can do, but also how technologies can be leveraged for interventions. Relying on designs that assume all working women will have access to phones and the internet will exclude often the most vulnerable. It also places much of the onus on the women themselves, both in terms of their safety and in terms of coming up with innovative ways to increase their earning potential and capacities. As a society, we need to do much more to support and enable our women to work, normalizing women's use of the internet and online spaces. Only then will the true potential of the economy be realized. Hadia Majid is Chair of Economics and Director Gentech at LUMS. Maryam Mustafa is Assistant Professor, Computer Science and Director Interactive Media Lab and Gentech. Published in Dawn, March 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सिर्फ 52% बालिग पाकिस्तानी ख्वातीन के पास मोबाइल फ़ोन है और पाकिस्तान खत्ते में सबसे ज़्यादा मोबाइल सिनफी फ़र्क का शिकार है। ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने के इम्कानात 49% कम हैं और कुछ मुतालियात के मुताबिक तकरीबन 10 में से 6 ख्वातीन को इंटरनेट के इस्तेमाल में किसी न किसी तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। वाज़े तौर पर एक बड़ी सिनफी डिजिटल तकसीम है और ये पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई तवज्जो हासिल कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है और हम ख्वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल शमूलियत की पुष्ट पर क्या हासिल कर सकते हैं? डिजिटल शमूलियत में सिनफी फ़र्क की तरफ तवज्जो तालीम, सेहत, लेबर और मालियाती मंडियों जैसे मुताद्दिद शुबों में डिजिटल टेक्नोलॉजियों की वसअत की वजह से है। एक ऐसा रुझान जिसमें कोविड के बाद ही तेज़ी आई है। डिजिटल रसाई में खला फिर नई अदम मसावात पैदा करता है, जबकि मौजूदा अदम मसावात को भी बढ़ाता है। डिजिटल स्पेस तक रसाई न होने का मतलब यह है कि नेटवर्क और राबता कायम करने, नई महारतों को सीखने और मौजूदा महारतों को बेहतर बनाने के मौके में कमी, बढ़ती हुई आमदनी के नए रास्ते तलाश करने और हासिल करने के मौके कम हो जाते हैं। क्रेडिट हासिल करने, बचत करने और घरेलू और बैरून मुल्क ग्राहकों को राग़िब करने के लिए। दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा ने 2016 में इंटरनेट और इस तक रसाई को इंसानी हुकूक के हुसूल के मुहर्रिक के तौर पर तस्लीम किया था, जिसमें इजहार राय की आज़ादी के हक तक महदूद नहीं है, जो अपने तौर पर एक बुनियादी हक है, बल्कि माशी, समाजी और तालीमी हुकूक जैसे दीगर हुकूक को भी मुमकिन बनाता है। दर हकीकत जब सही तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है तो टेक्नोलॉजी में माशी और समाजी बाख्तियार बनाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। जब लेबर मार्केट की बात आती है तो हम जानते हैं कि ख्वातीन माशी शराकतदारी और मौके के लिहाज से मर्दों के मुकाबले में नुमायां तौर पर बदतर हैं। ये हकीकत WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के जरिए तकरीबन हर साल उजागर की जाती है, जो पाकिस्तान को इस ज़ैली इंडेक्स में मुसलसल सबसे कम दर्जा देती है। इदारा जाती, समाजी और इनफरादी घरेलू सतह पर बहुत से अवामिल हैं जो ख्वातीन की बाज़ाब्ता लेबर फोर्स की शिरकत की सतह के मुकाबले में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी का बाइस बनते हैं। एक अहम शराकतदार नकलो हरकत की पाबंदियों के साथ मिलकर आला तौलीदी बोझ है। इसी तरह महफूज नकलो हमल की कमी और एक मुखासमाना अवामी जगह और काम की जगह भी है, जो काम पर नहीं बल्कि घर से ताल्लुक़ रखने वाली देखभाल करने वाली ख्वातीन के मुतय्यन करदा किरदार ओहे से जड़ी हुई है। पाकिस्तान में हमारी 2 दहाइयों की सिनफी तहकीक में
हर तरह के पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने बारहा इस बात पर रोशनी डाली है कि वो घर से बाहर अपनी नक़्ल व हरकत के मामले में करीबी निगरानी का सामना करती हैं और घर के काम के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल पर भी तवील वक्त गुजारती हैं। उन्होंने इस दुश्मनी और हरासानी पर भी जोर दिया है जिसका उन्हें काम के दौरान सामना करना पड़ता है। ये तमाम अवामिल उनकी सलाहियत और यहाँ तक कि घर से बाहर काम करने की ख्वाहिश को शदीद तौर पर महदूद करते हैं। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी उन रुकावटों को कम करने में मदद कर सकती है? बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी न सिर्फ ख़वातीन को दूर दराज से काम करने की इजाज़त देगी बल्कि बैन अल-अक़वामी फ्रीलांस मुलाज़मतों तक भी रसाई हासिल करेगी। बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी न सिर्फ ख़वातीन को दूर दराज से काम करने की इजाज़त देगी बल्कि बैन अल-अक़वामी फ्रीलांस मुलाज़मतों तक भी रसाई हासिल करेगी। हमने कोविड के दौरान बड़े पैमाने पर इसका इंकिशाफ देखा और हम देख रहे हैं कि ख़वातीन कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को हुनरमंद बना रही हैं और बैन अल-अक़वामी कंपनियों के साथ घर से काम तलाश कर रही हैं। वीमेन ऑफ डाइवर्सिटी जैसे मखसूस फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनका मिशन ऑनलाइन वर्कशॉप्स के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उन्हें दूर दराज के आजिलों से जोड़ना है। हम कम आमदनी वाली कम खानदा ख़वातीन में भी यही देखते हैं। अपने घरेलू कारोबार को कायम करने और वसअत देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साथ ही कम्युनिटी तंजीमों और हुकूक की वकालत करने वाले ग्रुपों के जरिए उनकी डिजिटल महारत पर जोर देना। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में डिवाइसेस और इंटरनेट तक रसाई हासिल करने वाली ख़वातीन माली खुद मुख्तारी, समाजी इंसाफ की तलाश, अपनी शनाख्त तलाश करने, एक दूसरे को बाइख्तियार बनाने के लिए इज्तिमाई तंजीमें बनाने और तफरीह करने के लिए दस्तयाब प्लेटफॉर्म्स से फ़ायदा उठाती हैं। हमारे तनाजुर में एक नायाब गुफ्तगू फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक जैसी टेक्नोलॉजीज उन्हें समाजी पाबंदियों के अंदर और उसके अर्द गिर्द बातचीत करने की इजाज़त देती हैं और उन्हें खिले आम चैलेंज किए बगैर और अपने लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी और एजेंसी तश्कील देने की इजाज़त देती हैं जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है। हम अपने काम में देखते हैं कि जब ख़वातीन में हौसला अफजाई होती है और डिजिटल जगहों और प्लेटफॉर्म्स की कदर को तस्लीम किया जाता है तो वो खानगिया आमदनी की सतह से कत नज़र इन प्लेटफॉर्म्स को अपनाने, सीखने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के काबिल होती हैं। सबसे अहम रुकावटें अक्सर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की होती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन को मुश्तरका वसाइल के तौर पर मोबाइल आलात तक रसाई हासिल है। ताहम व्हाट्सएप और मोबाइल वॉलेट जैसी ज़्यादातर एप्लीकेशंस एक सारिफ, एक डिवाइस मॉडल समझती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन की प्राइवेसी और अपनाने में संगीन रुकावटें पैदा होती हैं। इसके बावजूद डिजिटल टेक्नोलॉजी कोई इलाज नहीं है बल्कि एक पेचीदा, बारीक मंजरनामा है जिसमें ख़वातीन को शामिल करने के लिए मुतअद्दिद महाजों पर कार्रवाई की ज़रूरत है। हमने तकरीबन 200 कम आमदनी वाली ख़वातीन का इंटरव्यू किया है जो मुख्तलिफ पेशों, फैक्ट्री, घरेलू और घरेलू काम में शामिल हैं। हमने देखा है कि उन काम करने वाली ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनमें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट पाई जाती है। उन्होंने कहा कि घर से बाहर फ़ोन का इस्तेमाल उनके अहल खाना के साथ मसाइल का सबब बनेगा। इसके बरक्स घर से काम करने वाली ख़वातीन फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल में ज़्यादा सरगर्म थीं। खुलासा यह है कि हमारे काम से पता चलता है कि ख़वातीन को जिस्मानी और डिजिटल नक़्ल व हरकत के दरमियान तिजारत का सामना करना पड़ता है, दूसरे तक रसाई हासिल करने के लिए एक जगह छोड़ देते हैं। ये न सिर्फ इस किस्म की महारत को महदूद करता है जो ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म के कामों में कर सकती हैं, बल्कि यह भी कि मुदाखलत के लिए टेक्नोलॉजी ओहे से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन डिज़ाइनों पर इन्हिसार करना जिनमें यह फ़र्ज़ किया गया है कि तमाम काम करने वाली ख़वातीन को फ़ोन और इंटरनेट तक रसाई हासिल होगी, अक्सर सबसे ज़्यादा कमज़ोर अफराद को खारिज कर देंगे। यह ख़वातीन की हिफाजत और उनकी कमाने की सलाहियत और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए जदीद तरीक़ों के साथ आने के मामले में भी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी खुद ख़वातीन पर डालता है। एक मुआशरे के तौर पर हमें अपनी ख़वातीन को काम करने के काबिल बनाने, इंटरनेट और ऑनलाइन जगहों के ख़वातीन के इस्तेमाल को मामूल पर लाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही मईशत की हकीकी सलाहियत को बरूए कार लाया जा सकेगा। हादिया माजिद लम्स में इकनॉमिक्स की चेयरपर्सन और डायरेक्टर जनरल टेक हैं। मरिया मुस्तफ़ा असिस्टेंट प्रोफेसर,
कंप्यूटर साइंस और डायरेक्टर इंटरैक्टिव मीडिया लैब और जैन टेक हैं। अखज़ शुदा बतारीख 25 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.